A warm welcome and hello to all my friends. आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक को लेकर आज तक, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, ये सब करते करते अब हम इस स्टेज पे आए हुए हैं कि reproduction in humans, male reproductive system, and reproduction in humans, female reproductive system, male and female anatomy, physiology, and gametogenesis and structures of their gametes, ये सब डिस्क्राइब करके पूरा हो चुका है आज तक के इस सीरीज के लेक्चर्स में। अभी आज हम जो अगला लेक्चर करने जा रहे हैं, ये अब प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए we need the gametes to come together. So इसके लिए अब प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें क्या स्टेप्स होते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन में क्या स्टेप्स होते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टेप्स होते रहेंगे, all this we will now try to cover. So let's start our discussion. First of all, humans are viviparous. Viviparous का मतलब आप जानते हैं, viviparous means that the young one is delivered directly from the body of the parent. By directly, what we mean is that first an egg is laid and the young one develops inside the egg and comes out from the egg. ऐसा नहीं है. That is oviparous. That is seen in reptiles, that is seen in the fish, that is seen in birds. ये पहले अंडे डालते हैं, अंडे में यंग वन डेवलप होता है और वो अंडे से बाहर निकलता है. सो दैट इज ओविपैरस बिहेवियर. बट हमारी सिस्टम में ओविपैरस नहीं है, विविपैरस है. सो द यंग वन इज डायरेक्टली डिलीवर्ड. इन अदर वर्ड्स, इट अंडरगोज इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट. Typically, of course, this will always mean inside the body of the female. So it gets better chance for nutrition. It gets more safety during the early development stage. So obviously, viviparous behavior is a more superior method. It is a better method. But इसके लिए एक जरूरी है कि the male gamete has to be deposited inside the body of the female because the egg is inside the body of the female. उस egg का fertilization अगर body में ही हुआ तो ही जाइगोट बॉडी में रहेगा, फिर उसका डेवलपमेंट एज एम्ब्रियो एंड एज अ फीटस एंड एज अ बेबी टू बी बॉर्न बॉडी में कंप्लीट हो जाएगा. सो इसके लिए आपको इंटरकोर्स, या मोर टेक्निकली इन बायोलॉजी वी रेफर टू दैट एज कॉपुलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, द मेल inserts the copulatory organ of the male, which is the penis, into the matching copulatory organ of the female, which is vagina. So male की तरफ से penis, female की साइड से vagina, ये दोनों भी copulatory organs है coitus के लिए या copulation के लिए. Coitus, copulation, these are all words which essentially mean the same thing. Day to day life में हम इसको intercourse कहते हैं. इसके लिए ये दो structures important है. For this purpose, we said penis has to be erectile, and we had discussed some important structural features of the penis for this. So to take a quick recap, we had said that penis has some muscle bundles, which are, for example, a pair of muscle bundles called corpora cavernosa, corporacavernosa, corpora cavernosa, and one large on the top end but not so large along the length, third bundle, which we call as corpus spongiosum. Through the corpus spongiosum, there is the urethra passing. So through this, the urine can also be passed out to the exterior, and since
urethra is common for passage of sperms and semen fluid also. So seminal fluid will also be passed through this. This part we said is glans penis. This is covered by a fold of skin which can be retracted, and we said that is prepuce. So ये penis का structure हमने पहले ही discuss किया हुआ है. Quick look at the physiology of this. Inside this there is smooth muscle with lots of spaces and gaps in between. Now the blood vessel supplying to this, the artery which brings blood into this, and the vein which takes blood away from this, इसमें एक important difference है. Vein को surrounding it there are some smooth muscles like this catching it. So suppose ये vein है, on both sides इसको pinch किए हुए कुछ smooth muscles है. When the male is sexually excited, when the male is sexually activated, when he is interested in performing the sexual act, copulation, intercourse, तो उस वक्त ये muscles contract हो जाते हैं, pinch कर देते हैं vein को. So blood cannot go out, but artery keeps bringing in blood. So this whole space starts getting filled with blood. And so we said इसके बीच में जो hollow spaces है वो blood filled हो जाते हैं. So that causes this to increase in size, increase in length, and also become very firm. Just as एक balloon, उसमें अगर कुछ हवा पानी कुछ नहीं होगा तो वो flaccid या एकदम soft नरम हो जाता है, but उसमें पानी भर दो तो वो firm बन जाता है, थोड़ा सख्त बन जाता है. Same way it is happening over here. So the glans penis, the corpus spongiosum, the corpora cavernosa, they can all become blood filled. This is possible with the penis. That is why we call it an erectile structure. So accordingly, a penis ready for intercourse, ready for copulation, ready for coitus will be an erect penis, enlarged in size and firm. Then it can be used for penetration within the vagina. The vagina, on the other hand, has some glands which release some lubrication substances. It is also very elastic, and so under normal conditions, it is not having a very wide opening and it is not having that much of an expansion, but it is a very elastic tissue, and so it can increase its size and allow the penis to be entering into the vagina. This way, the coitus becomes possible. Now, when both male and female perform the sexual act and both are sufficiently sexually excited, then at a suitable point, the male can release the semen fluid. We call the reproductive fluid as semen. He can release this with a little bit of a propulsive action. By propulsive action, what we mean is a little bit forcefully. And so this way, semen released a little forcefully can be introduced into the vagina close to the opening of the cervix. The semen will have a certain specific composition, which we will shortly discuss. But this is essentially the reproductive act. This is the copulatory act. At the end of which, the process of release of semen, we generally refer to that as ejaculation. So let us write that word, ejaculation. E-J-A-C-U-L-A-T-I-O-N. Ejaculation is the process of releasing the semen with a little bit of a propulsive action, a little bit of a forceful pushing out of the semen. The semen which is ejaculated, it can also be called as the ejaculate. Now, the semen ejaculated at a given time during the reproductive act will generally have a volume of about 3 to 5 milliliter, 3 to 5 ml. That is one important criterion. इससे बहुत कम नहीं होना चाहिए. इससे बहुत कम होगा तो it could probably mean that it is not sufficient to bring about successful fertilization and childbirth. It could lead to probably a little bit of infertility. So volume wise, usually on an average, we find typically most males have ejaculate a quantity of about 3 to 5 ml at the time of each single act of copulation and ejaculation.
Now, within these 3 to 5 ml, there has to be sperms also. Now, we have already discussed the accessory glands in the male, and there we said that the seminal vesicles, the prostate, and the bulbourethral, or also what we call as the Cowper's glands, इनके contributions ही volume wise सबसे important है. So, for example, semen has nearly 60% to 65% of the volume, sometimes even up to 70%, coming from seminal vesicle. 25 to 30% is coming from the prostate gland, and another 3 to 5% is coming from the bulbourethral glands pair. तो ये सब मिला के almost 100% तो यही हो गया. So volume wise, sperms coming from where they are stored in the epididymis, they are not very high. Volume कम है, but number इनका बहुत ज्यादा है. It's a very high number because sperms are very, very small. So the number is quite high, and it could be as high as even up to 300 million sperms at the time of one single ejaculate, at the time of one single reproductive act. It could be anywhere between 200 to 300 million. So that's quite a lot. Now, besides that, it should also fulfill some other conditions. Semen के और भी कुछ features होने चाहिए for proper successful fertilization and a good chance of successful fertilization. So let's see what those are. इसको थोड़ा हम clear कर देते हैं. So let's clear this part. Yeah. And next important thing, ये जो 200 से 300 मिलियन तक है, इनमें से कम at least about 60% of these must be morphologically intact. So इनकी morphology, it should be correct morphology. What do we mean by morphology? We mean size, shape, structure, appearance, etc. So you know that the sperm is a spindle-shaped structure with a acrosome and a head region with a nuclear material inside that, genetic material, and then there is a narrow neck-like region in which there are centrioles, and then there is a middle piece with mitochondria, and then a flagellar part with a little bit of it covered with the cytoplasm, and the very tip of the flagellum is then without any covering. तो ये सारी morphology ठीक होनी चाहिए. ये नहीं कि इसका हेड कहीं malformed है, या कभी-कभी because this process is happening very fast, division does not take place properly, and sometimes you can get two-headed sperms. So ऐसा इसमें प्रॉपर सेपरेशन हुआ नहीं है, सो दोनों हेड एक दूसरे से ज्वाइंट है और एक कॉमन फ्लैजेलम है. इस टाइप का स्पर्म किसी काम का नहीं है. या किसी का हेड पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है, किसी में एक्रोसोम बना ही नहीं है, किसी का फ्लैजेलम शॉर्ट है, ऐसे स्पर्म का कोई फायदा नहीं है. सो मॉर्फोलॉजी खराब कई बार होती है, बट फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एक्ट एंड प्रॉपर फर्टिलाइजेशन टू बी टेकिंग प्लेस, we expect at least 60% should have proper morphology. They should be morphologically intact. Morphology कभी-कभी ठीक होती है, लेकिन functionally problems आ सकते हैं. यानी कि इसके अंदर के प्रोटीन्स दिखने के लिए तो है, फ्लैजेलम है, पर उनमें उतनी एक्टिविटी नहीं है, because of which उनकी मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. They can't swim so fast. They can't swim so vigorously. They can't maintain that stamina for long enough because the sperms have to cover a lot of distance. तो इसके लिए morphologically ठीक होते होते physiologically, motility wise also they should be good. So we expect that out of all these 60 morphologically correct ones, इनमें से कम 40% should show vigorous motility. Vigorous motility means very, very fast motion they should be capable of showing. So then the chances of fertilization are good. So ये semen के important characteristic features, quickly to summarize: volume 3 to 5 ml, pH you know is, we had already discussed that, it is slightly alkaline, that is also important. It should have the suitable energy substances and all other substances in it. The number of sperm should be around 200 to 300 million, out of which at least 60% should be morphologically intact, and out of that at least 40% should have good, vigorous, rapid
मोटिलिटी, फ्लैजेलर एक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो देन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर गुड. सो ये सीमेन के फीचर्स. अब इस तरीके से ऐसी सीमेन अगर वेजाइना में रिलीज हो जाए तो फिर आगे क्या होगा? लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट. सो लेट्स क्लियर ऑल ऑफ दिस. नाउ लेट्स क्विकली हैव अ diagram of cervix, vagina. Vagina has transverse folds, so ये इसमें ऐसे ऐसे folds है. Cervix का part is the lower part of the uterus. यहां से uterus wide होते जाएगा. So this is the outer opening, this is the inner opening of the cervical canal, or cervical opening has an outer exterior os and an interior os. इनमें से स्पर्म्स को अंदर जाना होगा. स्पर्म्स डिपॉजिट होंगे somewhere here in this region because the penis will be introduced into the vagina. So let's just use a slightly different color for this. So suppose this was the penis at the time of intercourse. It would be much larger than the vagina, and the vagina would temporarily, because it is elastic, it would expand and allow the penis to come in. यहां से ejaculate हो जाएगा तो इस एरिया में यहां सारा सीमेन आया हुआ है. इसमें से कुछ लोग they are not in a position to be on the right track. Some are there on the right track. Also, after the penis is withdrawn, the vagina again collapses and closes up. The labia close up. So some semen fluid may get pushed out also. So to improve the chances of the semen remaining, we find that semen has some proteins which get quickly coagulated, which get quickly a little semi-solid. So semen is not just free-flowing fluid, but it becomes a little jelly-like, it becomes a little gel-like. And then when it is released in that form, the propulsion, the pushing forward also becomes more effective, and it gets deposited better, and it is less likely to be thrown out. But the sperms in that soon get released because the gel-like proteins which have coagulated, fibrin type, they get lysed, they get broken also very quickly, and so धीरे धीरे sperms इसमें से release होते जाएंगे. Now, sperms की motility को suppressed रखने के लिए उसके covering पर there are some proteins which are not very active to begin with, but in the vagina there are other proteins, and the environment in the vagina, when the sperms are released into that, the superficial proteins which were inhibiting, which were slowing down the motility of the sperm, they get removed, and the sperm now becomes in a better position, in a better capacity, or develops a better capability of good vigorous motility and good swimming. उसकी flagellar action अब strong हो सकती है. This we call as capacitation of the sperm. So accordingly, sperms undergo a capacitation process, then they can start vigorously swimming. Now they will enter into the uterine cavity, and uterine cavity we know is something like this. So uterus का ये ऊपर का पार्ट फंडस है, आपको मालूम है ये, और दो साइड से दो ओविडक्ट्स का ओपनिंग है. These are the two horns. इसके अंदर ओविडक्ट का अंदर का पैसेज है, and that is in continuation with the uterine cavity, which in turn is here through the cervix, internal opening and external opening, and यहाँ पे vagina है, और यहाँ से sperms entry कर रहे हैं. So they will have to swim through all this distance, and oviduct on both sides. अब चलो इसको अब क्लियर कर देते हैं. Oviduct on both sides has an ampulla, and it also has a infundibulum with fimbriae, and there is of course the ovary. यहाँ पे कहीं ovum release हुआ है. This could also be on the other side, but हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साइड ड्रॉ करें तो भी सफिशिएंट है. तो सपोज यहां से ओवम रिलीज हुआ है
On the insides of this, there is ciliated epithelium, which is carrying out a continuous beating movement. Cilia are constantly moving. So you get the fluid in the surrounding space moving towards this direction, and that results in the ovum carried inside the oviduct, and it starts moving through the infundibulum space towards the ampulla. ये होते होते ओवम को यहां से यहां आते आते कभी 6 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी उससे भी थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है. So by the time it comes somewhere over here in the ampulla region, it is already somewhere on an average about 12 hours since it was released. And an ovum is carrying food with it, but it cannot keep on living forever. In fact, if it is not fertilized, then its life is generally 1 day only, which means around 24 hours. कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा सा 36 घंटे तक, या कभी कभी रेयर केस में it may live up to even 48 hours, but generally on an average about 1 day is the life. So in that 1 day आधा समय तो निकल गया यहां तक आते आते, और थोड़े वक्त में यहां तक आ जाएगा. अब ऐसे समय में if this lady who has undergone an ovulation, if she is reproductively active, if she has a sexual partner, and if she has participated in copulation, in the reproductive act at around this time, so then sperms will also be deposited and sperms will start swimming. अब ओवम की तरफ से स्पर्म के लिए कोई कीमोटैक्सिस नहीं होता है. जैसे प्लांट्स में हमने देखा था कि सिनर्जिड्स डायरेक्ट द मोशन ऑफ द pollen tube towards the position of the egg. The pollen tube doesn't grow randomly here and there. उसको एक chemotactic mechanism से it is given a particular direction and it is invited, so to say, towards the egg. यहाँ पे ऐसा कोई phenomenon नहीं है. ऐसा कोई रिलेशनशिप ओवम और स्पर्म में नहीं है. ओवम स्पर्म को कोई आवाज देके या कोई केमिकल रिलीज करके बुला नहीं रही कि मैं यहां हूं, इस तरफ आओ. सो कुछ स्पर्म्स इस तरफ भी जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे. सो कहने के लिए तो 200-300 मिलियन है, लेकिन एक्चुअली इतना सारा डिस्टेंस कवर करके एक्चुअली ओवम के पास पहुंचते पहुंचते very few sperms are left. Sometimes we find that just about maybe 1,000 to 2,000 sperms may reach the ovum. It is generally expected that for a good chance of fertilization, somewhere around 1,000 should reach there. वैसे तो कहने के लिए 1 sperm is sufficient, but बहुत सारे अगर है तो उसमें से एक सक्सेसफुली पहुंचेगा. जैसे बहुत सारे पोलन थे तो कुछ ना कुछ तो सही जगह पे, सही स्टिग्मा पे पॉलिनेशन करके पहुंच जाएंगे. वैसे यहां पर भी if many of them enter the race, then somebody is likely to qualify to actually reach the end target. Okay, so keep that in mind. So many of these will try to swim. Somewhere around 1,000, 2,000 or so will actually end up coming close to the ovum. Now, ये distance in the actual female body you may feel is not very much. It may feel just about इतना सही तो है, क्योंकि ये उसके suppose ये this is not a diagram to scale, but then within the abdomen pelvis region, this is in the lower region, vagina is over here, यहां से यहां it's a matter of a few inches. तो आप बोलेंगे इसमें कौन से बड़ी चैलेंज है, but the problem is sperm is so small, so tiny. तो उसके लिए इतना डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है. हमारी साइज इतनी बड़ी है तो हमारे लिए 2 किलोमीटर काफी कुछ हो सकता है. मैराथन अगर दौड़नी पड़े या लॉन्ग रेस 15-20 किलोमीटर दौड़ना पड़े तो वी विल ऑल गेट टायर्ड. सम ऑफ अस मे नॉट बी इवन बी एबल टू कंप्लीट दैट जर्नी. स्पर्म्स के लिए भी वैसे ही है. उनके लिए ये मैराथन जर्नी की जैसा है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर देम. सो सम ऑफ देम डाई ऑन द वे. बिसाइड्स यूट्राइन कैविटी में कोई WBCs हो सकते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, वो स्पर्म्स को स्वॉलो कर सकते हैं, खा सकते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. अब इसमें आप कहोगे कि ऐसा क्यों, ये तो फीमेल है, ये भी ह्यूमन है, स्पर्म्स भी ह्यूमन है, बट
in our immune system, anything that does not belong to our own body, it is foreign substance and our white blood cells will attack that. So वो ये नहीं सोचेंगे कि ये स्पर्म तो हम इस मेटिंग पेयर को, मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को बच्चा देने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मुझे इसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा डब्ल्यूबीसी नहीं सोचेगा। डब्ल्यूबीसी का एक ही दिमाग चलेगा, ये कोई बाहर से आई हुई चीज है, इसको आई हैव टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। सो मेनी स्पर्म्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय द डब्ल्यूबीसीज आल्सो। सो होते होते एक्चुअली यहां पहुंचने में ज्यादा सक्सेस नहीं होते, जस्ट अबाउट 1000 के आसपास, कभी कभी थोड़े ज्यादा, 2-1000 के आसपास। अब ये सारे यहां पहुंचते पहुंचते इनको भी लगभग 12 घंटे से 24 घंटे लग ही जाते हैं। समटाइम्स विथ वेरी विगरस मोटिलिटी सम स्पर्म्स में रीच इन 6 आवर्स, बट जनरली इनको भी तकरीबन आधा दिन, एक दिन चला जाता है। अब इसका आप एक इंपॉर्टेंस समझ लो। ओवम रिलीज होके उसको यहां आते आते 12 घंटे लग गए, स्पर्म्स को यहां से यहां आते आते ऐसे ही 6-12 घंटे लग गए। अब स्पर्म्स की लाइफ आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड ओवर हियर, दैट इज आल्सो अबाउट 1 डे और अबाउट 24 आवर्स। इन अ रेयर केस दे मे लिव अ लिटिल लॉन्गर। इसकी भी लाइफ अबाउट 24 आवर्स है, इन अ रेयर केस अ लिटिल लॉन्गर। What this means is the timing of ovulation and the timing of intercourse, if they are very close to each other, ovulation होके 10-12 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उससे और वक्त, उतने में अगर इंटरकोर्स हुआ है, कॉपुलेशन हुआ है, इजैकुलेशन होके स्पर्म्स डिपॉजिट हुए हैं, तो ये ओवम मरने से पहले ये स्पर्म यहां पहुंच पाएंगे। वैसे ही ये जब हुआ है उसके लगभग थोड़ा सा आगे पीछे अगर ओव्यूलेशन हुआ है, तो इनका इस तरफ जर्नी होते होते इसका भी यहां तक ट्रैवल हो जाएगा, एंड देन दे कैन हैव अ गुड चांस ऑफ मीटिंग। द स्पर्म इज वेरी अनलाइकली टू गो बियॉन्ड दिस, बिकॉज बाय दिस टाइम इटसेल्फ इट इज वेरी टायर्ड। इससे और जाने की उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, और उसके लिए और भी वक्त लगेगा, मे बी मोर देन 24 आवर्स, बाय विच टाइम इट विल ऑल्सो बी डेड। एंड सो ये रीजन जो है, एम्प्यूला वाली रीजन, दैट इज द प्लेस वेयर देयर इज हाईएस्ट चांस ऑफ ovum release from the ovary during ovulation process and sperms deposited in the vagina during the copulation process. इनका यहाँ पे मीटिंग ग्राउंड, एक जगह पे एक समय पे आना पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। Then the fertilization is most likely to take place somewhere over here. ओवम को इससे और आगे आते आते बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तब तक वो ओवम मर जाएगी। स्पर्म्स को इसके आगे आते आते बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तब तक स्पर्म्स मर जाएंगे। That is why it is said ampulla region is the region where there is highest chance of fertilization. Now, if this timing has been correct so that they both reach the ampulla at about the same time, then fertilization can start taking place. अब जब fertilization हो जाएगा तो क्या होगा देखने के लिए, let's get another diagram. So we have the ovum. ओवम में एक मेटाफेज वाला न्यूक्लियर एक्टिविटी है, वहां पे मेटाफेज जारी है, और डायग्राम्स में हमारे दिखाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो हम भी न्यूक्लियस दिखाएंगे, बट एज आई सेड मेटाफेज में न्यूक्लियस बचता नहीं है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली निकल गए हैं। बट ऐसा सपोज ओवम है, उसके साथ उसकी एक सहेली है पोलर बॉडी, उसके साथ जन्मी हुई, उसकी एक सिस्टर की तरह। ये इसका विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ से ये पेरीविटेलाइन स्पेस एंड जोना पेलुसिडा है, उसके चारों तरफ से कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड। मेनी लेयर्स ऑफ दीज, एटलीस्ट 5-6 लेयर्स तो है ही है, थोड़े से रे लाइक, थोड़े से इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स है ये। अब इन सब में से स्पर्म्स जो है कंपेयर टू दिस दे आर वेरी टाइनी। सो ये चारों तरफ से अगर स्पर्म्स अप्रोच करने लगे तो ये सब रास्ते में है, इसको यहां तक पहुंचना है, बीच में ये ऑब्स्टिकल रेस है। सो दे हैव टू फाइंड अ वे थ्रू दिस। Now how will they do that? They can't
push away the corona radiata cells, वो तो खुद ही इतने छोटे छोटे हैं. So for that उनके पास जो एक्रोसोम हमने डिस्क्राइब किया था with a lot of hydrolytic enzymes, ये उनका वेपन है, ये इनका केमिकल वॉरफेयर का वेपन है. एग्जाम में मत लिखो केमिकल वॉरफेयर, समझने के लिए. This has the chemicals which will help it to make a way. It has enzymes which will dissolve, which will hydrolyze and break the substances which will obstruct. So इसमें जो hyaluronic acid है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके एक्रोसोम के अंदर hyaluronidases नाम का एंजाइम है. So it will start releasing hyaluronidase, and there will be many sperms which will also do that, and they will all try to dissolve the cementing substance, and all of them are in that race. They are all trying to make a way forward. बीच में hyaluronic acid आ गया तो उसको dissolve करके वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं. चारों तरफ से शुरू तो हो गई कोशिश, कुछ थोड़े आगे आके थक जाएंगे, कुछ और आगे आएंगे, कुछ finally maybe a dozen or so will reach up to zona pellucida. अब जोना पेलुसिडा एक और बैरियर आ गया बीच में, इसको भी तोड़ के आगे जाना है. सो फॉर दैट देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड जोना एक्रोसिन. सो ये दोनों सब्सटेंसेस हाइलुरोनिडेज एंड जोना एक्रोसिन, ये दोनों नाम आप याद रखो. These two substances help the sperms to make a way through hyaluronic acid of the corona radiata cells and the zona का material, the zona pellucida material. इन दोनों को barriers को dissolve करते हुए कुछ कुछ sperms यहां से भी आगे निकल के विटेलाइन मेम्ब्रेन तक आ जाएंगे. बट अब ज्यादा नहीं बचे हैं. 200-300 million to begin with, about 1,000 up to this stage, about a couple of dozen up to zona pellucida stage. बाकी अभी भी कोशिश में है, कुछ थके हुए हैं, कुछ अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं. ये थोड़े आगे निकल के आए हैं. उसमें से 5-6 शायद विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच गए. अब विटेलाइन मेम्ब्रेन सबको पूछेगा तुम ह्यूमन हो कि नहीं हो, एंड वी डिस्कस्ड हाउ विल दैट हैपन. विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर फर्टिलाइजिन नाम का प्रोटीन है, स्पर्म के ऊपर उसको मैचिंग एंटी फर्टिलाइजिन नाम का प्रोटीन है. इफ बोथ बिलोंग टू ह्यूमंस, then there will be a match. There is a suitable structural alignment and the sperm can attach to the membrane. Then it will release some proteases and some lipases and it will destroy the membrane. It will try to make a small hole, puncture hole बनाने की कोशिश करेगा और उसमें से वो अंदर चला जाएगा. The moment the sperm enters inside, immediately, absolutely instantaneously, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की साइड को चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स, मैं तो डायग्राम में सर्कल की तरह दिखा रहा हूं बट एक्चुअली स्फीयर है, चारों तरफ से देयर आर सम ग्रैन्यूल्स कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. They release some chemicals which stick on the inside of the vitelline membrane, and the vitelline membrane immediately becomes a little solidified. It becomes a little impenetrable, so that कोई और sperm अगर अंदर आने की कोशिश करेगा, अब उसके लिए no entry हो जाएगी. अब तुम लेट हो, दरवाजा बंद हो चुका है. एक sperm को हमने एंट्री दे दी है, अब और किसी के लिए रास्ता नहीं है. This is important, otherwise मल्टीपल स्पर्म्स आ जाएंगे तो ज्यादा क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन और 46 का डिप्लॉयड नंबर नहीं बन पाएगा. यू वोंट गेट अ प्रॉपर फंक्शनल ह्यूमन जाइगोट, कुछ और अजीब बन जाएगा विच विल नॉट बी वायबल. सो ओनली वन शुड बी अलाउड टू एंटर. इन अदर वर्ड्स, पॉलीस्पर्मी, मोर देन वन स्पर्म, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए. सो कॉर्टिकल रिएक्शन एंश्योर्स दैट. अब जाके एक स्पर्म अंदर आ जाए तो ये जो सेकेंडरी oocyte थी जिसका मायोसिस 1 पूरा हो चुका था, वो सडनली जाग उठती है, वो सडनली दोबारा एक्टिवेट हो जाती है. अरे मेरा तो मायोसिस अभी पूरा नहीं हुआ है,
यहां तो स्पर्म आ गया फर्टिलाइजेशन के लिए. दैट इज समथिंग लाइक, डोंट राइट इन द एग्जाम, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. इट इज समथिंग लाइक शादी के लिए दूल्हा आके खड़ा हो गया है, दुल्हन अभी भी मेकअप बना रही है, ये नहीं चलेगा. सो क्विकली चलो चलो. सो इमीडिएटली आफ्टर दिस द सेल डिविजन गेट्स रीएक्टिवेटेड. मेटाफेज तक ऑलरेडी आ चुका है, मेटाफेज 2 तक. एनाफेज 2, टेलोफेज 2 क्विकली हो जाते हैं. एनाफेज इज ऑलवेज अ वेरी क्विक रिएक्शन. It takes place very quickly within 2 minutes. Telophase is again going to take place in such a way that the nucleus will come to one side and the second nucleus will be here. And that one nucleus with a little cytoplasm, cytokinesis एक और बार होके second polar body बन जाएगा. बचा हुआ जो दूसरा न्यूक्लियस है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है. तब तक स्पर्म का न्यूक्लियस भी बाहर निकला है, वो मेल प्रोन्यूक्लियस बन गया है. ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं एंड वी फाइंड दैट दे फ्यूज अप विथ वन अनदर. दे एक्सचेंज एंड गिव ऑल देयर जेनेटिक मटेरियल. 23 क्रोमोसोम्स दोनों इकट्ठे होके एक कॉमन न्यूक्लियस बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. बट with this, then you now have a fertilized ovum, a zygote with 46 chromosomes, and there are 2 polar bodies on one side. Now, यहाँ पे स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ये पोलर बॉडी भी डिवाइड होके और एक पोलर बॉडी बना लेती है. समथिंग लाइक दिस. बट कीप इन माइंड, actual research is not sure about this. So जरूरी नहीं कि ये डिवाइड हो. कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से ये होता है, कुछ के हिसाब से ये नहीं होता है. As far as our NEET and NCERT textbook goes, ये नहीं होता है. So we will then, इसको हम undo कर देते हैं. We will leave it as 2 polar bodies only. That is as far as NEET is concerned. So this way you have now got a fertilized ovum, a zygote has been created. This zygote can now develop into a new individual, a new human being can now be born to this, out of this zygote. इस तरीके से fertilization process पूरा हो जाता है. So the intercourse or copulation process, at the end of that ejaculation, release of semen. Semen के features, सीमेन रिलीज होने के बाद स्पर्म्स की जर्नी, उस वक्त अगर ओव्यूलेशन होकर ओवम की भी जर्नी आई है तो एम्पुलर रीजन में इन दोनों का एक जगह पे, एक समय पे, एक जगह पे इकट्ठा आना पॉसिबल हो सकता है. फिर आगे के ये स्टेप्स होके स्पर्म्स अपना रास्ता बनाते बनाते यहां पहुंच सकते हैं और एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बन सकता है. दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस एंड अ जाइगोट कैन बी फॉर्म्ड. Once a zygote is formed, what will happen for its development as it starts becoming an embryo first and a fetus after that and a baby, infant baby to be born after that, ये इसके आगे की डेवलपमेंट हम आगे चल के बाद में देखेंगे. लेकिन यहां तक का जो प्रोसेस है इसको मैं मानता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा. मुझे उम्मीद है ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. कुछ डाउट्स क्वेश्चंस है तो आप हमें जरूर मेल किया करो, मैसेज सेंड किया करो, फोरम पे डाला करो. वी विल गिव आवर आंसर्स टू दैट. विद दिस some notes are shared, some MCQs are shared. Keep studying the notes and keep studying the MCQs also. We stop our discussion about the process of fertilization or in the humans at this point. In the next session we will discuss beyond fertilization, the development of the embryo and pregnancy and all of that. यहाँ पे मैं आपसे अब गुड बाय ले लेता हूँ. जय हिंद.